All right. So starting from this thing called Chistiya Sufi order. So it was established in Chist. Now this Chist basically is the name of the place in Afghanistan, and the Chisti Sufi order. It was set up by Ishaq Sami. Name of the person is important. Ishaq Sami actually set up this Chisti silsila or Sufi order in Chist, Afghanistan, but it was primarily spread in India by Moinuddin Chisti, who came to India with the army of Muhammad Ghori. Okay, now Chisti, the people who actually believe in Chisti silsila, they avoid state patronage or state services. Now Moinuddin Chisti was born in Sakistan, which is again a place in Afghanistan. Like I said, it was started by Ishaq Sami from a place called Chist in Afghanistan, and hence the name of the or Sufi order. But then Moinuddin Chisti is the one who actually spread it in India, in Indian context. Moinuddin Chisti is more important. So he was born in Sakistan, Afghanistan, 1142 CE. Later he moved to Khurasan province. He became disciple of Khwaja Usman Horani. Again, not a very important fact, but you can remember that मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम दो गुरु हो सकते हैं, एक इशक समी और एक ख्वाजा उस्मान होरानी. Raja Sahu, the grandson of Shivaji, was the first to give nazr or gift at Dargah of Khwaja Moinuddin Chishti in Ajmer. Bakhtiyar Kaki was a disciple of Moinuddin Chishti as well. So this is another Sufi saint who is like a lesser Sufi saint, and Moinuddin Chishti is the greater Sufi saint. So Kaki was a disciple of Moinuddin Chishti, the greater Sufi saint. Also, Sahu, the grandson of Shivaji. Sahuji, I think he was the first to give Nazrana or gift at the Dargah of Khwaja Moinuddin Chishti in Ajmer. So these few facts are important. Now Kanji Shakkar, he was another person belonging to Ajodhan region, whose nickname was Baba Farid. And Ganji Shakkar from Ajodhan or Baba Farid, he was famous for his compositions as they were used in Guru Granth Sahib. Ganji Shakkar was the guru of Nizamuddin Aulia and son-in-law of Balban. So this is more important. And Nizamuddin Aulia के भी गुरु कौन थे? तो गंजी शक्कर बाबा फरीद थे, और बाबा फरीद was none other than son-in-law of Balban. So basically Nizamuddin औलिया के भी कुछ निकनेम थे, जैसे महमूद इलाही और गरीब नवाज. When Alauddin asked Nizamuddin to meet, the Sheikh replied, "There are two doors in my house. If the Sultan comes from one door, I will go out by another." So this was the aura of Nizamuddin Aulia. Now Sabir Kalyari and Nasruddin Chirag Dehelvi were disciples of Nizamuddin Aulia. Kalyari and Sabir Kalyari and Nasruddin Chirag were Dehelvi. These were all disciples of Nizamuddin Aulia. Amir Hassan, who is also known as Sadi of India for his great ghazals. Amir Hassan, nicknamed as Sadi of India for his great ghazals. Then Sheikh ul Hind is also known as Salim Chishti. He lived in Fatehpur Sikri, which is 12 miles from Agra. Unka nickname tha Sheikh ul Hind. It is believed that Jahangir was born to Akbar by the blessings of Sheikh Salim Chishti. So Jahangir was born to Akbar by the blessings of Sheikh Salim Chishti. Then Sahabuddin, I think he was the founder of Surawardi order from Sindh region, and Dara Shikoh was not a founder but a follower of Qadiriya disciple. So in the previous lecture I told you that there were certain sections which adhered to the Shariat Islamic law. They were called as Bashara, and those who didn't, Beshara. So Sahabuddin was the founder of Surawardi, and Darashikoh was from Qadiriya. Now let's revise a little bit. Jahangir was born to Akbar from the blessings of Sheikh Salim Chishti, and the tomb of Salim Chishti is in Sikri. He also lived in Sikri, which is like 12 miles away from Agra. And Sheikh ul Hind was the nickname of Sheikh Salim Chishti. Now Sabir Kalyari and Nasruddin Mahmud Chirage Dehlavi, these were disciples of Nizamuddin Aulia. And Amir Hassan is considered as Sadi of India known for his great ghazals. Then Ganji Shakkar Ajodhan, or nicknamed as Baba Farid, he was son-in-law of Balban as well as the guru of Nizamuddin Aulia. And Nizamuddin के भी कुछ nicknames थे, Mahmud Ilahi and Garib Nawaz. These two names, Mahmud Ilahi, Garib Nawaz, belong to Nizamuddin Aulia.
Once there is an anecdote that Talabuddin asked Nizamuddin to meet him, whereas Nizamuddin replied, "There are only two doors in my home. If the Sultan comes from one door, I will go out by another." Now, Muinuddin Chishti came in the army of Muhammad Ghori, and he was born in Sakastan, Afghanistan in 1142. And Muinuddin Chishti के भी गुरु थे ख्वाजा होरानी, और चिश्त नामक जगह अफ़गानिस्तान से चिश्ती सिलसिला स्टार्ट हुआ था बाय इशक समी. And Chishtis avoided the state patronage, and Chishti Sufi order was established in Chist, Afghanistan by Ishaq Sami, but it was primarily spread in India by Muinuddin Chishti, who came to India with the army of Muhammad Ghori. So Chishti avoided state patronage. Now, Muinuddin Chishti was born in Sakastan, Afghanistan, 1142. Later, he moved to Khurasan province, and he became the disciple of Khwaja Horani. Raja or Sahuji was grandson of Shivaji. He was the first to present Nazrana or gift at the Dargah of Muinuddin Chishti in Ajmer, Delhi. Bakhtiyar Kaki was also, I think Bakhtiyar Kaki was the disciple of Muinuddin Chishti. Now, there's a minute difference here, that while I have read about a lot of disciples of Nizamuddin Auliya, but here's one rare disciple of Muinuddin Chishti, that is Bakhtiyar Kaki. Now, Ganji Shakkar from Ajodan, nicknamed Baba Farid, and known for his compositions which were integrated later on in Guru Granth Sahib. He was son-in-law of Balban and the guru of Nizamuddin Auliya. Nizamuddin Auliya ke bhi nickname Mahmud-e-Ilahi and Garib Nawaz. Then Sabir Kalyari and Nasruddin Mahmud Chirage Dehelvi, these were the followers of Nizamuddin Auliya. Amir Hassan, Sadi of India, known for his ghazals. Sheikhul Hind is the nickname of Sheikh Salim Chishti, who lived in Sikri for 12 miles away from Agra. It is said that Jahangir was born to Akbar by the blessings of Salim Chishti. Sahabuddin was the founder of Suhrawardi order, and Darashikoh was the follower of Qadriya order. Now, Ahmad Sirhindi, Akbar and Jahangir. Now, Ahmad Sirhindi basically was the founder of Naqshbandi order, and I think Jahangir was a follower of Naqshbandi. I'll have to confirm that. So, let's ask Google, by the way. Meanwhile, moving on, so sub-school of Chishtiya order in Bihar was called as Firdausi. So I think Firdausi belonged to Bihar region, and Abdul Jilani was the founder of Qadriya. Darashikoh was a follower of Qadriya Silsila. Jilani was the founder of Qadriya, whereas Sahabuddin was the founder of Suhrawardi, and Ahmad Sirhindi was the founder of Naqshbandi. I'll confirm that. So Naqshbandi was founded by Baha al-Din Naqshband, founded Naqshbandi, a Sufi Sunni order. The order is named after him and is considered one of the more orthodox Sufi orders. So I'll ask Naqshbandi. So no, Akbar and Jahangir were not followers of Naqshbandi order, but they did come into contact with Naqshbandi scholars and Sufi leaders. Akbar was a follower of Salim Chishti. Jahangir showed his gratitude to the Sufi saint Khwaja Muinuddin Chishti by wearing pearl earrings after recovering from an illness. So, Ahmad Sirhindi, a Naqshbandi Sufi scholar who influenced Jahangir and reversed some of Akbar's policy, and Aurangzeb, who was a follower of Naqshbandi Silsila. This is one of the more important facts. So, I can write it here that Ahmad Sirhindi was one famous scholar of Naqshbandi order, and Sirhindi and Aurangzeb, they were sort of got along well. And okay, so Naqshbandi का एक motto था Wahadul Shuddh over Wahadul Wajud, that belongs to Naqshbandi. Sub school of Chishtiya order in Bihar was under Firdausi. Abdul Jilani, Qadriya founder, he was a founder of Qadriya. Now we come to Babur. So like Aurangzeb, Babur also followed Naqshbandi order, which is again a rare fact to remember. So Babur and Aurangzeb, that's the first and the last Mughal emperors, they followed the Naqshbandi orders. And although Ahmad Sirhindi spread this in India, the founder of Naqshbandi order was Naqshbandi Bukhari, I think overseas. Then Rahim and Rashkan were medieval poets of Hindi literature. Rashkan was a Krishna disciple who wrote Prem Vatika. So quite an unusual fact that in medieval period there were certain Hindi literature poets as well, the name of whom were Rahim and Rashkan. Okay, Rahim and Rashkan were Hindi poets in the medieval literature era. Okay,
and Rashkhan wrote Prem Vatika. Now Shatari was the last order. Sheikh Ghaus was instrumental in spreading it. He had good relations with Humayun and Tansen. I think Tansen belonged to this. He expressed his spiritual quest in Jawahar-e Khamsa and translated Amrit Kund of Hat Yog by the name Baharul Hayat. Shatari saints try to reconcile Hindu and Muslims. So this point is important, that he expressed his spiritual quest in Jawahar-e Khamsa. So Jawahar-e Khamsa term पे एक सवाल बन सकता है. This belongs to the Shatari order, and this person called Sheikh Ghaus tried to translate Amrit Kund of Hat Yog, which is like a chapter of Hat Yog. He translated that by the name Baharul Hayat. Okay, that was done by Shatari of Sheikh Ghaus of Shatari order. Now coming to Babur, Zahiruddin Muhammad was his name, and Alam Khan was the uncle of Ibrahim Lodi, who invited Babur to invade India. Alam Khan was uncle of Ibrahim Lodi, who invited Babur to invade India. Ibrahim Lodi ordered Daulat Khan to visit his capital, but Daulat Khan violated his orders and rather sent his son Dilawar to Babur with a message to help him dethrone Ibrahim Lodi and enthrone Alam Khan. Now you should understand this story, internal politics going on. There was this person called Ibrahim Lodi, and Ibrahim Lodi ordered Daulat Khan to visit. So Alam Khan was the uncle of Ibrahim Lodi, who invited Babur to invade India. And why would he do so? I don't know. Some internal politics going on. But Alam Khan was the one who invited Babur to invade India, and he was the uncle of the contemporary emperor of Delhi Sultanate, Ibrahim Lodi. So Alam Khan was the uncle of Ibrahim Lodi, who invited Babur to invade India, and Babur with a message to help him dethrone Ibrahim Lodi and enthrone Alam Khan. Okay, so the uncle of Ibrahim Lodi had aspirations of taking over Delhi Sultanate. That's why he invited Babur to dethrone Ibrahim Lodi. Babur belonged to Shaktai Turk tribe. During this Afghan internal feud amongst Lodis, Rana Shanga of Mewar was also asserting his authority, and he also invited Babur. And so Rana Shanga of Mewar was also in favor of calling Babur. Then Battle of Sarepul. This is the battle where Babur got defeated by Shibani Khan or Sahibani Khan. Babur got defeated by Sahibani Khan. Babur this way lost Samarkand, and for 3 years he wandered in the hills of Afghanistan and the plains of Khurasan. He tried to recapture Samarkand but lost. Tulguma technique, I know what is that. It was used extensively by Shaibani Khan, and later this was the reason Babur got lost against Shaibani Khan. But he got hold of Kabul in 1504 and he assumed the title of Padshah. Kabul in 54 and assumed the title of Padshah. That is Babur. Later in 1526, Babur employed the same technique with artillery and gunners and horsemen. So the person responsible for artillery was Ustad Ali Kul, and gunners Mustafa, who accompanied Babur, and due to his generosity after the victory, Babur was called as Kalandar. Artillery was used for the first time in India. Now the name of the gunner was Mustafa, whereas artillery was taken care of Ustad Ali Kul, and the Battle of Sarepul was the one in which Babur got lost against Sahibani Khan. However, he roamed around in the valleys of Afghanistan and finally captured Kabul in 1504. Battle of Khanwa 1527, Battle of Chanderi 1528, and Battle of Ghagra 1529 between Babur and Afghan rulers. However, the first use of cannons is reported from the battles of Bahmani and Vijayanagar in the 14th century. This indicates that gunpowder was used in India even before Babur. Babur's father side अगर देखें तो Timurid है, mother side Genghis Khan की है. He ascended throne of Fargana on 14th of February 1495. Later, Humayun, the son of Babur, built Qilai Kuna in memory of Babur. So Humayun built Qilai Kuna in the memory of Babur. In particular, the Battle of Khanwa 1527 against Rana Sanga was declared by Babur as jihad. After victory here, Babur assumed the title of Ghazi. So Battle of Khanwa 1527 against Rana Sanga was considered as a jihad by Babur. Babur's empire extended from Balia to Hisar and Bayana to Gwalior, but region of Rajasthan was not included in his empire, which remained under Rajputs. So Bayana to Gwalior and Balia to Hisar. Bayana to Gwalior, Balia to Hisar. But Rajasthan was not included in his empire. Babur mentioned in Baburnama the Hindi Rajya of Mewar and Vijayanagar. His autobiography Tuzuke Baburi and Masnavi
originally written in Turkish, was translated into Persian by Abdurrahim Khani Khanan. Babur also wrote a book on Muslim law, Mubayya and Risali Usaz. मुस्लिम लॉ पे बाबर ने दो किताब लिखी, मुबैया एंड रिसाली उसाज. Mughal's official language was Persian. However, he wrote his autobiography in Turkish, then which was later translated to Persian by Abdurrahim Khani Khanan. He constructed Babri Masjid, whose architect was Mir Baqi. Now don't confuse this Mir Baqi. Ustad Isa was the architect of Taj Mahal during Shah Jahan. Mir Baqi was the architect of Babri Mosque, and I think there was another architect. Okay, I'll revise that later. Humayun's conquests देखें अगर तो let's go the reverse order. हुमायूं सबसे पहले दो जो इम्पोर्टेंट बैटल्स है वो देख लेते हैं. पहले चौसा 1539 में जो हार गया, एंड कन्नौज जो 1540 में अगेन हार गया. Now Chunar is from 1532 and Bhojpur is 1534, and Battle of Debra 1532 against Mahmud Lodi. Battle of Debra, that was Humayun's battle against Mahmud Lodi of Gujarat, I think. 1532 Battle of Debra. And Siege of Agra 1526, Kanpur 1526, Kabadian 1529, Siege of Kalinjar 1531. Kalinjar wala important hai, Siege of Kalinjar 1531, because Humayun was in constant tussle with Sher Shah. So Siege of Kalinjar in 1531, Battle of Debra 1532 against Mahmud Lodi of Gujarat, Chunar 1532, Bhojpur 1534, Chausa 1539 and Kannauj 1540, but he lost. Humayun was not a soldier like his father. He faced problems of weak financial systems and predatory Afghans. He invaded Kalinjar in 1531, captured Chunar fort in 1532, and Raisinia fort also in 1532. This is one of the lesser known facts. Finally, Humayun returned and recaptured Delhi in 1555 after a long exile through the Battle of Sirhind. Humayun's wife Haji Begum constructed the tomb of Humayun through architect Mirza Ghiat. Now this is another architect we are coming across. Humayun's tomb, I think it is in Lahore. No, it is in Delhi. It was constructed by Mirza Ghiat with assistance from Humayun's wife Haji Begum, or Gulbadan Begum was the sister, okay, of Humayun, who wrote Humayunama in Persian. Humayun's tomb by Haji Begum, the widow, is first dome-shaped mausoleum of India made completely of white marbles. Humayun made a new city called Deen Panah with two mosques, Jamali Mosque and Isa Khan Mosque. Also brought two painters from Persia, Mir Sayyad Ali and Abdus Samad. Hindal, Aksari, Kamran were other brothers of Humayun. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ वी कम टू द शेर शाह. ऑल राइट, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे. हुमायूं के बारे में थोड़ा थोड़ा देखे थे हम लोग, थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दे रहे हैं, फिर आगे देखते हैं. सो हाँ, 1531 ए इम्पॉर्टेंट सीज ऑफ कलिंजर बाय हुमायूं. बैटल ऑफ देवड़ा 1532 हुई थी, हुमायूं और महमूद लोदी ऑफ गुजरात. देन चुनार 1532 एंड भोजपुर 1534, चौसा 1539 एंड बैटल ऑफ कन्नौज दैट इज़ 1540, जिसमें हुमायूं हार गया थे शेर शाह से. फिर 15 साल के एग्जाइल पे चले गए और वापस जब आए तो 1555 में फिर से लड़े थे, बैटल ऑफ सिरहिंद. ठीक है, ये है लिखी. ठीक है. नाउ some other facts related to Humayun. So Humayun was not a soldier like his father Babur. He faced problems of weak financial systems and predatory Afghans. He invaded Kalinjar 1531, Chunar 1532. Okay, then Raisinia fort एक भूल जा रहा है, उसको भी याद रखो. Raisinia fort was also captured by Humayun. Humayun finally returned and recaptured Delhi in 1555. Battle of Sirhind. Humayun's wife Haji Begum, Humayun's sister Gulbadan Begum. तो गुलबदन बेगम ने बायोग्राफी लिखी थी हुमायूं नामा, और हाजी बेगम ने एक हुमायूं's टॉम्ब बनवाया था दिल्ली में विद द हेल्प ऑफ एन आर्किटेक्ट कॉल्ड घियात, मिर्ज़ा घियात. देन हुमायूं's टॉम्ब बाय हाजी बेगम द विडो इज़ द फर्स्ट डोम शेप्ड मौसोलियम. पहला डोम शेप्ड मौसोलियम ऑफ इंडिया मेड कम्प्लीटली ऑफ वाइट मार्बल्स. ये पहला था. हुमायूं मेड अ न्यू सिटी कॉल्ड दीन पनाह विद टू मॉस्क्स. तो दो मॉस्क्स बनाए थे, जमाली मॉस्क और ईसा खान मॉस्क. ये दोनों मॉस्क्स उसी कॉम्प्लेक्स में थे दीन पनाह के. ऑल्सो ब्रॉट टू पेंटर्स फ्रॉम पर्शिया, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समाद. हुमायूं के कुछ राइवल ब्रदर्स थे, अस्करी, हिंडल, कामरान. तीन थे ना. हाँ, तो
हाँ, HAK, हिंडाल, अस्कारी एंड कामरान, दे वर द राइवल ब्रदर्स ऑफ हुमायूं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फरीद खान। और कुछ रह गया रिवाइज के लिए? बाबर का थोड़ा सा है, जैसे उसका एम्पायर जो है बलिया से हिसार और बयाना से ग्वालियर, राजस्थान नहीं था उसके में, ठीक है। मेवाड़ और विजयनगर को हिंदी राज्य के नाम से बुलाता था वो बाबर। दैन तुजू के बाबरी मसनावी ये लिखा था उसने टर्किश में, हालांकि बाद में उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था बाय अब्दुल रहीम खानी खनन। मुस्लिम लॉ पे 2 किताब लिखी थी, मुबैया और रिसाली उसाज। और बाबरी मस्जिद बनवाया था किस आर्किटेक्ट की मदद से? मीर बाकी की मदद से, बाकी की मदद से, ठीक है। तो और हाँ, तो अब ये क्या है, बाबर्स फादर साइड तिमुरिड थे, मदर साइड किंगिस खान था। और 14 फरवरी 1495 में ये फरगना में रूल किए थे बाबर। देन हुमायूं द सन ऑफ बाबर लेटर बिल्ट किलाई कुन्हा बना दिया था बाबर की याद में, ठीक है। और बाबर डिक्लेयर्ड द फाइट अगेंस्ट राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा 1527 एज जिहाद, एंड आफ्टर विनिंग दैट बैटल बाबर रिज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी, ठीक है। और बाकी बैटल्स तो ठीक है, खानवा 1527, चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घाघरा 1529, ठीक है, बिटवीन बाबर एंड अफगान रूलर्स। बाबर नक्शबंदी फॉलो करता था, औरंगज़ेब भी नक्शबंदी फॉलो करता था, बट बाबर के ग्रेगेरियस नेचर की वजह से उसको कलंदर भी बुलाते थे, जस्ट लाइक अ निकनेम, ठीक है। 2 गनर ले आया था, एक गनर ले आया था जिसका नाम मुस्तफ़ा था, और एक आर्टिलरी पर्सन ले आया था जिसका नाम उस्ताद अली कूल था। इट वॉज वेरी कूल आर्टिलरी, उस्ताद अली कूल, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ये फरीद खान जो है लेटर बिकेम शेर शाह। ही वॉज सन ऑफ हसन खान द जागीरदार ऑफ सासाराम बिहार। तो सासाराम बिहार के जागीरदार का बेटा था फरीद खान, वो लेटर केम टू बी कॉल्ड एज शेर शाह, ठीक है, बिकॉज ही किल्ड अ टाइगर, हैंस टाइटल वॉज गिवन बाय बहार खान लोहानी। किसी लोहानी सरनेम वाले व्यक्ति ने इसको ये टाइटल दी थी, शेर शाह। नाउ शेर शाह गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर, ठीक है। 1529 शेर शाह assumed the title of Hazrat Ala after defeating the ruler of Bengal, Nusrat Shah, in battle of Surajgarh. But he assumed the royal title of Sher Shah after defeating Humayun in the battle of Chausa 1539 and ordered to read khutbah by his name and mint coins under his name. Sher Shah also defeated Maldev Rajput near the battle of Samel, ठीक है। तो एक मालदेव राजपूत नियर अजमेर इन बैटल ऑफ समेल, एक ये याद रखो, बैटल ऑफ चौसा अगेंस्ट हुमायूं ये याद रखो, और एक नुसरत शाह को हराया था रूलर ऑफ बंगाल, एक वो याद रखो उसके बाद, क्योंकि उसने अपने आप को उपाधि दी थी हज़रत आला, ठीक है। 3 बैटल्स याद रखना है शेर शाह के लिए। एक लोहानी नामक व्यक्ति ने उसको शेर वाली उपाधि दी थी बिकॉज ही किल्ड अ टाइगर। देन ही वॉज सन ऑफ अ जागीरदार ऑफ सासाराम बिहार। हिज नेम वॉज फरीद खान. His childhood name was Farid Khan. Then he got his education from Jaunpur. Then Sher Shah got the title of Hazrat Ala when he defeated Nusrat Shah, a ruler from Bengal. Then Chausa में हुमायूं का हराया, उसके बाद वो खुटबा अंडर हिज नेम एंड कॉइन्स टू बी मिंटेड बाय अंडर हिज नेम वो कर दिया. शेर शाह ऑल्सो डिफीटेड मालदेव राजपूत इन द बैटल ऑफ समेल. द नेक्स्ट year 1540, Humayun with the help of brothers Askari and Hindal fought against Sher Shah again but lost in the battle of Kannauj 1540. It was then Sher Khan adopted the title of Sher Shah, and then Humayun ran away to Sindh and there he married Haji Begum को शादी किया. Gave birth to Akbar in 1542. He took shelter in the Iranian king's court on the condition of converting to Shia. मुगल्स वर अदरवाइज सुन्नी, ठीक है. तो कन्वर्जन टू शिया हो गया, तब वो ईरान में शेल्टर मिला उसको, किसको, हुमायूं को, और वहाँ पे 1542 में अकबर का जन्म हुआ था. अब शेर शाह का रेवेन्यू देखे तो ये रैयतवारी सिस्टम क्यों है भाई. सिस्टमैटिक मेथड ऑफ मेजरिंग द लैंड फॉर असेसिंग इट्स रेवेन्यू. ही इंट्रोड्यूस्ड प्योर गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स. प्योर गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स ले आया था शेर शाह in the place of beaten or mixed coins. His silver coin was called दाम रुपया. सिल्वर दाम तो हम पढ़ चुके हैं ना, गोल्ड मोहर सिल्वर दाम, और कॉपर को क्या बोलते थे, तो रुपया तो मोहर रुपया और दाम था, ठीक है. Anyways, these coins were in circulation till 1835, but after the fall of Sultanate, Humayun was the first ruler to issue some sort of gold coin. He introduced the system of पट्टा and कबूलियत. पट्टा इन कबूलियत के लिए आप याद रखो इसको, शेर शाह के, ठीक है. नाउ
Sher Shah's administration was totally centralized. He divided the whole kingdom in 47 governments and arranged a different system for Bengal particularly, where he divided the province into 19 governments, where he appointed Shikdar, that is military in charge, Amiri Bengal, non-military in charge, Chief Munsif, that is judge, Amil, that is in charge of land revenue, Fotedar, treasurer था, Karakuns, accountants थे, Kanungi या Kanungo, maintained revenue records, Pargana and Ikta were administrative units, Diwani Wizarat, Department of Revenue and Finance during Sher Shah, Diwani Aris आर्मी के लिए था, दीवानी रिसालत फॉरेन मिनिस्टर के लिए था, एंड दीवानी इंशा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस. ज़ब्ती हर साल असेसमेंट, ये एक तरीका था लैंड रेवेन्यू असेसमेंट करने का, ज़ब्ती हर साल शेर शाह के दौरान. सिकंदरी गज़ वाज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन कॉल्ड दाम. तो दाम नामक कॉपर कॉइन सबसे पहली बार शेर शाह लेके आया था, ध्यान रखना. एंड सिल्वर रुपया, तो 1 रुपया इक्वल्स टू 64 दाम्स हुआ करता था. ऑल्सो गोल्ड कॉइन कॉल्ड अशरफी और मोहर वॉज ऑल्सो इन सर्कुलेशन. तो मोहर हो गया, रुपया सिल्वर का हो गया और दाम हो गया. 1 सिल्वर रुपया इक्वल्स टू 64 दाम्स हो गया कॉपर का, ठीक है. देन इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट वाइल द टर्म रुपया हैड प्रीवियसली बीन यूज्ड एज अ जेनेरिक टर्म फॉर एनी सिल्वर कॉइन, ड्यूरिंग हिज रूल रुपया स्ट्रिक्टली मेंट अ सिल्वर कॉइन of 178 grams, which became the precursor of modern rupee. He built sarais, that is guest house, every 2 कोस या फिर 8 kilometers, sarais every 8 kilometers with watchmen under an official called shahana. ठीक है. Sarais developed into kasbas or market towns, and goods paid customs duty only at 2 places. Only at 2 places. Goods produced in Bengal or imported goods paid duties at Bengal Bihar border at Sikri Gali. Otherwise, import duties for goods coming from Central Asia paid duties at Indus. So, the second instance duties were charged was at the time of sale of goods. The local village headmen were called mukaddams and maintained personal royal force called Khasa Kail. Sher Shah maintained personal royal force called Khasa Kail. It was just like Pandari, जो शायद नहीं कौन रखते थे, sort of like privatized force. Ahadis. So उसी तरह से शेर शाह भी रखता था. That was called as खासा कैल. Now let's revise a little bit. तो ये खासा कैल हो गया. That was his privatized separate force. मुकद्दम हो गए ये क्या, विलेज हेडमैन, ठीक है. विलेज हेडमैन को मुकद्दम बोल रहा था. देन केवल 2 ही जगह बेसिकली ड्यूटीज़ कलेक्ट होती थी. एक तुम्हारा गुड्स प्रोड्यूस्ड इन बंगाल और इम्पोर्टेड पेड ड्यूटीज़ एट द बंगाल बिहार बॉर्डर. अदरवाइज इम्पोर्ट ड्यूटीज़ फॉर गुड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, इंडस के आसपास वहाँ पे. तो एक तो बंगाल बिहार बॉर्डर के आसपास और दूसरा इंडस नदी के आसपास. इंडस वाला सेंट्रल एशिया से जो गुड्स आता था वहाँ पे टैक्स देना होता था, और जो बेसिकली बंगाल में बनाया जाता था या इंपोर्ट किया जाता था बंगाल साइड से, तो उधर फिर बंगाल बिहार के बॉर्डर पे दैट वाज कॉल्ड सीकरी गली. तो एक सीकरी गली नामक जगह पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे करना होता था और एक इंडस नदी के किनारे. देन तो 2 ही जगह तुम्हारा देना था. देन ही कंस्ट्रक्टेड वेरियस गेस्ट हाउसेज और सराइज एवरी 8 kilometers and put them under the in charge of Shahnaz, who was sort of a watchman. Then sarais developed into kasbas over time और market towns. Then duties कहाँ देनी थी हम बता चुके. खासा कैल के बारे में बता चुके. मुकद्दम्स, they were like village headmen. Then he was the first to introduce copper dam and silver रुपया, मतलब strictly a silver रुपया. And gold मोहर तो चल ही रहा था. और मोहर was synonymously sometimes called as ashrafi. Then zabti हर साल was a sort of revenue collection method. And Sikandari gaz was a tool to measure land. Then he was the first ruler to introduce copper coin called dam and silver रुपया. Okay, बता चुके. Then ministries and departments काफ़ी हद तक administration centralized था. बंगाल के लिए उसने अलग से provisions बना रखे थे, वरना एक यूनिफाइड प्रोविज़न तो चला ही आ रहा था पूरे किंगडम के लिए, लेकिन सिर्फ बंगाल के लिए उसने अलग से कुछ प्रोविजंस बना रखे थे, जिसमें कि उसने सिर्फ बंगाल प्रोविंस को 19 गवर्नमेंट्स में बांट दिया था. बल्कि अगर पूरा अन्य राज्य देखा जाए, उसका पूरा अन्य शासन का, तो फिर 47 गवर्नमेंट्स में बांटा था. नाउ कुछ मिलिट्री डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ देख लेते हैं. तो वेरी शिकदार शेर शाह के समय मिलिट्री इंचार्ज हुए करते थे, और अमीरी बंगाल ये नॉन मिलिट्री इंचार्ज थे. पहले इन दोनों को याद रखो. शिकदार मिलिट्री इंचार्ज और अमीरी बंगाल. शिकदार हो गए मिलिट्री इंचार्ज,
और अमीरी बंगाल हो गए नॉन मिलिट्री इंचार्ज। देन चीफ मुंसिफ हो गए जज, ठीक है, चीफ मुंसिफ हो गए जज। अमील हो गए इंचार्ज ऑफ लैंड रेवेन्यू, अमील हो गया इंचार्ज ऑफ लैंड रेवेन्यू। नाउ डोंट कंफ्यूज दिस, ठीक है। शिकदार मिलिट्री इंचार्ज, अमीरी बंगाल, ये सिर्फ बंगाल वाला बता रहा हूँ मैं जिसमें अलग प्रोविजंस बनाए थे। तो शिकदार हो गए मिलिट्री इंचार्ज, अमीरी बंगाल हो गए नॉन मिलिट्री इंचार्ज, अमील हो गए सिर्फ अमील रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है, इंचार्ज ऑफ लैंड रेवेन्यू। फोटेदार हो गए ट्रेजरार, कैराकुंस हो गए अकाउंटेंट्स। नाउ दीज टू आर कंफ्यूजिंग, फोटेदार्स आर ट्रेजरार्स एंड कैराकुंस आर अकाउंटेंट्स। देन कानूंगो ये इंस्पेक्ट करते थे बेसिकली लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। परगना एंड इक्ता वर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली सेंट्रलाइज था। पट्टा और कबूलियत का भी सिस्टम वही पहली बार लेके आया था शेर शाह। अरबिक और देवनागरी स्क्रिप्ट्स में सिक्कों पे जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह लेटर्स या कुछ लिखा रहता था। और ठीक है, प्योर गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स पहली दफ़ा यही लेके आया था शेर शाह। तो ये काफ़ी कुछ हो गया शेर शाह के बारे में। फिर हाँ, हुमायूं का जो उसने छुप के कुछ समय बिताया था, दैट वाज इरानियन किंग ऑन अ कंडीशन टू कन्वर्ट हिमसेल्फ टू शिया। देन अजमेर में बैटल ऑफ समेल हुई थी शेर शाह की मालदेव राजपूत के साथ। चौसा में हुमायूं के साथ 1539 और कन्नौज में 1540। शेर शाह ऑल्सो फॉट विद नुसरत शाह, अ रूलर ऑफ बंगाल, जहाँ जिसको हराने के बाद वो हज़रत आला नाम की उपाधि अपने सर पे ओढ़ के भौकाल मारता था, ठीक है। फिर शेर टाइटल उसको लोहानी नामक व्यक्ति दिया था बिकॉज ही किल्ड अ टाइगर। जौनपुर में इसकी एजुकेशन हुई थी। फरीद खान इसके बचपन का नाम था। ही वॉज अ सन ऑफ जागीरदार ऑफ सासाराम बिहार। तो ये हो गया। नाउ मूविंग ऑन, मिलिट्री की बात करें। सो इंस्पायर्ड बाय अलाउद्दीन खलजीज रिफॉर्म्स, शेर शाह पेड सोल्जर्स डायरेक्टली थ्रू कैश and every soldier had his चेहरा recorded and horse branded by an imperial signature. So अलाउद्दीन खलजी के रिफॉर्म से वो इंस्पायर था and he used to pay the soldiers directly and every soldier had a sign to sort of identify him. Except Assam, Gujarat, Nepal and Kashmir, whole North India was part of the Sher Shah's empire. तो जैसे मैंने बताया बाबर के किंगडम में राजस्थान नहीं आता था, वैसे ही शेर शाह का दो तीन याद रख लो कि कश्मीर नहीं था और नेपाल नहीं था, गुजरात नहीं था और असम नहीं था, ठीक है। तो देखो असम और गुजरात तो आसान है, एक ईस्ट में हो गया, एक वेस्ट में गुजरात हो गया, इधर असम हो गया, नॉर्थ में कश्मीर हो गया। तो ये कुछ हिस्से थे जो शेर शाह के एम्पायर में नहीं आते थे, बाकी इनको छोड़ के सभी आते थे इसके एम्पायर में। क्राइम वॉज लेस ड्यूरिंग द रिजीम एज ही वॉज टॉलरेंट, ठीक है, टू अदर रिलीजन्स एज वेल। नाउ मौसोलियम एट सासाराम बनाया गया था इसका। हाईवेज़ ये बना ऑलरेडी बता चुके हैं। सड़क की आज़म दैट इज़ सोनार गाँव से बंगला, सोनार गांव से जो बंगाल में है वहाँ से लाहौर तक है सड़क की आज़म, ठीक है। और लाहौर से और भी कई सड़क बनवाया था ये, जैसे सोनार गांव से सिंध तक, आगरा से बुरहानपुर तक। नाउ दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जोधपुर से चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक। रोहतास फोर्ट इन पाकिस्तान विच इज़ यूनेस्को हेरिटेज साइट एंड रोहतासगढ़ फोर्ट इन बिहार एंड शेर शाह सूरी मस्जिद इन पटना, अ न्यू सिटी बेहरा इन पाकिस्तान, ऑल दीज वर बिल्ड बाय शेर शाह सूरी। नाउ मलिक मोहम्मद जयासी रोड पद्मावत एंड अब्बास सरवानी रोड तारीख़ शेर शाही, अच्छा ठीक है, अब्बास सरवानी ड्यूरिंग हिज रेन। देन ही डाइड इन द कलिंजर फोर्ट कॉन्क्वेस्ट। पुराना किला वॉज स्टार्टेड बाय हुमायूं एंड लेटर रीबिल्ट बाय शेर शाह। तो जस्ट लाइक दीन पना वॉज बिल्ड बाय हुमायूं, हुमायूं ऑल्सो ट्राइड टू बिल्ड पुराना किला बट बीच में छोड़ दिया, उसको बाद में शेर शाह ने कंप्लीट किया था, ठीक है। और पद्मावत लिखी गई थी और तारीख़ शेर शाही अब्बास सरावनी ने लिखा था। और बाकी जो शेर शाह ने मोस्टली आर्किटेक्चर बनवाया था वो मोस्टली पाकिस्तान में था। रोहतासगढ़ फोर्ट इन बिहार एक ये याद रख लो बस, ठीक है। इसको एक कंफर्म कर लेते हैं, रोहतासगढ़ फोर्ट इन बिहार। सो दिस वाज बिल्ट बाय रोहतासगढ़ फोर्ट इन बिहार वाज बिल्ट बाय मल्टीपल पीपल इंक्लूडिंग, अरे यार, शेर शाह सूरी ने भी इसमें योगदान दिया है, ठीक है। और क्या बनवाया था? पुराना किला, ठीक है, रिपेयर करवाया था। रोहतासगढ़ फोर्ट हो गया। और रोड्स बनवाई थी सोनार गांव से सिंध, मुल्तान से लाहौर, जोधपुर से चित्तौड़, ठीक है। और मौसोलियम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा।